Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of simple equation. This is second question of its exercise 4.1. So the question says that check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. So हमें चेक करना है जो हमें इक्वेशन गिवन है एंड ब्रैकेट में हमें इसकी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है. सो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. सो हम कैसे चेक करेंगे. सो फर्स्टली हम इन पार्ट ए एन की वैल्यू पुट करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मेरे LHS इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 5. सो n की वैल्यू है 1. सो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 एंड RHS हमें गिवन है 19. So 6 is not equal to 19. So LHS is not equal to RHS. So ये हमारा not satisfy. So n equal to 1 is not the solution of this equation. Then B. Equation B है 7n plus 5 equal to 19. So n की वैल्यू पुट करेंगे हम. LHS हो जाएगा हमारे पास minus 2 into 7. So 7 into minus 2 plus 5 is equal to 7 to the minus 14 plus 5 is equal to minus 9. जबकि हमें राइट हैंड साइड गिवन है RHS is equal to 19. So minus 9 and 19 इक्वल नहीं है एक दूसरे के. सो ये जगह हमारा LHS not equal to RHS. So n equal to minus 2 is not the solution of equation 7n plus 5 equal to 19. Then part C is equation 7n plus 5 is equal to 19. हमें वैल्यू गिवन है n की 2. सो पुट करेंगे हम LHS is equal to 7 into 2 plus 5 is equal to 14 plus 5 is equal to 19. Then right hand side हमें given है इसमें equation में 19. So 19 is equal to 19. So LHS is equal to RHS. So n equal to 2 is a solution of equation 7n plus 5 is equal to 19. Then part D is 4p minus 3 is equal to 13. So LHS हो जाएगा हमारे पास P की वैल्यू है ना 1. So 4 into 1 minus 3 is equal to 4 minus 3 is equal to 1 and right hand side में given है 13. So 1 is not equal to 13. So हो जाएगा LHS is not equal to RHS. So P equal to 1 is not the solution of equation 4p minus 3 is equal to 13. Then part E is 4p minus 3 is equal to 13 and value given है p की minus 4. So हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 4 into p की वैल्यू given है minus 4 minus 3. So हो जाएगा 4 into 4 into minus 4 minus 16 minus 3 is equal to minus 19 and right hand side हमें given है 13. So minus 19 is not equal to 13. So LHS not equal to RHS. So P equal to minus 4 is not the solution of equation 4p minus 3 is equal to 13. Then part F is equal to 4p minus 3 equal to 13, P equal to 0. So लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे LHS इज इक्वल टू 4p. सो 4 into p की वैल्यू 0 minus 3. सो जाएगा 0 minus 3 इक्वल टू minus 3 एंड राइट हैंड साइड में गिवन है RHS इज इक्वल टू 13. सो minus 3 is not equal to 13. So LHS not equal to RHS. So p equal to 0 is not the solution of the equation 4p minus 3 is equal to 13. Thank you.